Okay, Ji. So let us discuss a point that, for example, in our programming paradigm, you have been given a task to, for example, plot a graph. ठीक है? आपने x और y एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट कर दो और आप ये काम सारा मेन फंक्शन में कर रहे हैं. यू आर इम्प्लीमेंटिंग इनसाइड द मेन. सुन ले भाई तमाम लोग. We are plotting. We are required to plot a graph, and you are implementing it inside the main of code. And you have written, for example, 20 lines of code over here to plot a graph. Afterwards, you have changed the parameter. Requirement was to change the parameters and again plot the graph. So you change the parameters over here, and again those 20 lines we need to rewrite over here. Same task of implementing these 20 times, time and time again. You have to change the parameters and plot the graph time and time again. Yes. तो इसमें आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि एक चीज which you have already written it once, but you have to rewrite it n number of times, isn't it? Yes. At this moment, our problem with this current programming paradigm is this. Although we have to copy paste the lines, and what is the counter scenario which we are also implementing? For example, in the same program, we require a power function with these set of values. We just call the function, get our task done. Then we whatever do, we again require a power function. We call a function with the new values, get our task done. We can call this function n number of times. But do you see writing the code of the power function time and time again? It is written there once, but it is assessed n number of times. So you can clearly differentiate the programming paradigms. Over here, it's a plotting of graph lines, 20 lines. You are required to do something else, changing of parameters, rewrite the code. Change parameters, rewrite the code, and keep on rewriting the code till the time you are required to plot the graph. Same scenario, no need of rewriting the code. Just call where it is written once. So why not write these 20 lines in a separated, isolated area over here. Remove them from your code and just call them whenever you are required. Likewise, ये तो ग्राफ प्लॉटिंग है. आपने एवरेज कंप्यूटेशन की, उसका अलग से आइसोलेटेड एरिया में बना लिया. Whenever you require average computation, just call this, which is only written once. You have done something else, उसका separate area बना ले. N number of separate areas, isolated areas you can create, and you can just reference them from the main program, just like power function, set width function, every library function. We have just called it. Have you written its definition anywhere? It is written once in an isolated area. So actually we want to copy this same programming paradigm in our daily programming paradigm. And this is called, if these are library functions, we need to create user-defined functions. These are our functions. Isolated memory areas, isolated programming areas, which we don't need to rewrite them. We will just call them and get our task done. Sorry. So the task was actually to divide and conquer. Strategy was, you have broken, let's say, divided degree 45 mechanical into 3 syndicates. Why? Why not one? Easy to administer. You can think of having the other 2 syndicates in the same room. It will be a mess, isn't it? Yes, sir. Easy to administer. Why a country or state is divided? Country is divided into provinces or states. एक ही क्यों नहीं province बना लेते सारा? Administration है, easy to administer. Same is the concept. कि एक break down a major problem into sub problem and get your task done. Divide and conquer strategy. तो functions नहीं है, modules हैं. They work independently in a separate ways, and then ultimately
work collectively to solve the entire problem. Functions, divide and conquer strategy. Construct a program from smaller pieces or components. अब आपको एक चीज समझ आ गई, ये हैं वो smaller pieces. Written separately. Main function is there. You cannot write a code without this function. And anything with a name and a pair of braces is a function. Anything with a name and pair of braces is a, and we need to give input. We might not give input, we can give it. It depends upon our requirement. Each piece becomes more manageable than the original program. Degree 45, syndicate A, more manageable than 45 ABC altogether. Isn't it? तो ये स्ट्रेटेजी है जी, जिसको हमने अपनी प्रोग्रामिंग पैराडाइम में अडॉप्ट करना है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अब आपकी प्रोग्रामिंग एक सेपरेट आइसोलेटेड एरिया में होगी, जिसको आप सिर्फ कॉल करेंगे. मेन में सिर्फ कॉलिंग होगी, जिस तरह पावर फंक्शन. तो मेन का साइज आप बहुत क्रिस्प हो जाएगा. आप 1000 लाइन का भी कोड लिखेंगे, आई विल जस्ट गो टू मेन, पता लग जाएगा आप किस तरह कॉलिंग कर रहे हैं. एक्चुअली वी आर इन अ पोजीशन ऑफ राइटिंग अ बुक. मैंने आपको कहा ना, हर चीज सिमुलेट होती है रियल वर्ल्ड से. प्रोग्रामिंग ए कंप्लीट प्रोग्राम भी इट्स लाइक अ बुक. What happens when you open a proper written book? What comes in front of you? First of all, contents, chapter बाद में, summary. So we'll see those things happening in our program. Before main, we will have contents. Summary, main will be the summary of the complete program. It will present the complete summary. You will just go to the main, you will see, okay, power function, graph plotting, something else, again graph plotting, power function, close the main. No complexity inside the main. So main will give us the summary of the complete program, and then in book, after summary, what comes? Details in chapters. So here are the chapters. 1, 2, 3. So if you want to go and consult the details, your functions are there. So complete program is like a book. Table of contents, summary, details, everything. We are actually trying to simulate the same concept of programming paradigm. So functions, of course, classes के बाद advanced concept है. Modules क्या होते हैं? ये functions हैं. New, which we are trying to create. These are new. 1, 2, 3, 4. Prepacked from the standard library. ये कौन से? Which are already implemented. You just have to name them. You proper define हुए. Over top, you have to include the respective library. Math library, IOMine, time library, and number of libraries. See standard library, VGA related libraries, so on and so forth. Function invoked by function call. Function किस तरह call होता है? क्या लिखते हैं? If we call somebody's name, you will of course listen. So functions are invoked by writing name of a function. Simple. Along with the required input. अब हम इसको थोड़ा फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर ओन फंक्शन. आप इतनी एनालॉजी जरा पढ़ें. रियल वर्ड एनालॉजी of a company where a boss main function calls a worker function, hands him over some data to process this data. The worker function goes, get the data processed, report back the result to the boss. यही हम करना चाहते हैं. हम चाहते हैं हम यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग का कोड लिख दें, उसको इनपुट करें, ग्राफ प्लॉट हो जाए, कंट्रोल वापस आ जाए. फिर आप कुछ भी करें, फिर सिर्फ नाम कॉल करें ग्राफ, वही फंक्शन कॉल हो, कोड रन हो. तो इसमें क्या हुआ, हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा. वो 500 लाइन्स कोड की दोबारा लिखनी नहीं पड़ रही.
they are only written once. And this leads to the concept of software engineering called software reusability. Once you have written the code, you don't need to rewrite it. You have written it once, use it a number of times. Just like library function. इसको properly name दिया गया software reusability. If you are going towards modular approach of programming. तो इसी को अगर फर्दर देखें, फॉर एग्जांपल हम C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोई देख लें, कोई एक लाइब्रेरी हम देख लें, हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स अस इन कंप्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल मैथ्स लाइब्रेरी, हम जस्ट नेम लिखते हैं और इनपुट देते हैं. इनपुट का हमें को नाम पता लग गया. आर्गुमेंट्स. Input has three names actually: input, arguments, and parameters. If you come across any of these, input, arguments, or parameters, they actually means this 2,3. They actually mean 900. Whatever the input you are providing to this function, this input is actually outside world information for square root. Outside world information. तो square root एक box है, आप उसमें 900 as an input feed कर रहे हैं. It will process it and give you the result. ये वो terminology है जो आपकी बुक में यूज हुई है. तो अगर आप you come across these terminologies, input parameters provides outside world to the defining function. It means this. Outside world information to the defining function. Means power function के लिए 2 or 3 एक information है which is been given to process. बातें हैं last में. हम warning last time. So square root function, the preceding statement would be print 30. और maths library जो भी आपको output करती है, it outputs in double data type में आपको output आती है. So while writing maths library functions, all these are legitimate. You can write any of, you can follow any of these writings. You can have a constant variable, you can have a variable. Whatever the value, it gets computed. You can have a nesting of calling. X की value square root, whatever the answer is, again उसका square. Then comes the final answer. You can even have an expression. 3 is minus 6x. Whatever it computes to, compute the square root of that. So many things are already available for us. For example, if we have a broader look at the programming functions standard library for math, its spectrum of functions could be this: ceiling, cosine. So for all of these tasks, you don't need to program them. You just need to use them. वही जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कार बनानी है तो आपने टायर नहीं बनाना, टायर मैन्युफैक्चर नहीं करना, ना ही उसका इंजन मैन्युफैक्चर करना. These are there customized off the shelf until and unless you are enhancing something inside the engine. These are there for your utility. So function is like this. Library functions are like this, which are there to help us to achieve our required goal. तो एक्सपोनेंशियल सीलिंग, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं. यूज़ किस तरह करेंगे, एक्सपोनेंशियल 1 2 करेंगे क्या वैल्यू आएगी. फ्लोर, मॉडुलस, log to the base 10. पावर, देखिए पावर फंक्शन इज देयर, साइन कोसाइन टेंजेंट स्क्वायर रूट, ठीक है जी. वो सब चीज़ें आगे एग्जांपल्स भी अगेन जाएं, इनको यूज़ करें, इट विल गिव यू द रिजल्ट्स. जस्ट इंक्लूड द मैथ्स लाइब्रेरी. हम सेम प्रोग्रामिंग पैटर्न करना चाह रहे हैं कि हम भी ये अडॉप्ट कर लें अपनी प्रोग्रामिंग पैराडाइम में, कि इसी तरह हम भी देखिए, देयर आर 3 थिंग्स by which you can implement a library function. First, you need to add the library, isn't it? You need to first add the maths library at the top. Second, you need to call the function. And third, from where the control goes, where it is defined. 3 things. So same 3 things we are going to implement in our code. First of all,
just like declaring an integer. If you declare an integer, you let the compiler know I am going to declare an integer whose name is, let's say, A with the content 10. So A gets created with this value, isn't it? Yes. So likewise, you are letting the compiler know I am going to create a function func whose name is this. It will take an integer as an input and it will return an integer as an output. This is how a function is declared. This is how a variable is declared. This is how a function is declared. You want to create your own function. You just name that function, whatever the name is. While writing syntax, I should write name. Whatever the name is, your own created function. I will send an integer. Data type of that should be mentioned. The function after processing will return an integer. Semicolon. Function declaration. This is how a function is declared. We will be doing this thing at the top before writing the main. Then comes main. So it's a contract signing with the compiler. You have signed the contract with the compiler that if I am going to write this function, don't generate an error. I have declared it. Its name is this name with an integer. Now if I am writing, let's suppose integer x equals to 10 and I am writing over here name, you should not generate an error. It's a legitimate approach of calling a function, just like power of this. So I have actually kept my promise. I have kept the same name while calling and given the same integer data as an input. So now it's fine. So three things. First is declaration. Second, function call. And third thing, where it actually goes, definition. After the main function comes the definition part. Int. Let's give it a meaningful name. Scale. You want to scale a number. Scale. Int. Scale. Int. Y. Body of definition. Y equals to y cross y. तो आपने स्टार्ट किया, डिक्लेयर कर दी. You are inside the main. You have created a variable with the value 10. Square of 10. From here, the control will go there. ये जो 10 है, इसको रिसीव कौन करेगा? X लिख दीजिए. X की वैल्यू 10 है. क्लियर? आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू को स्केयर कर. क्या आंसर आना चाहिए? अभी तो देखें ना यहाँ पर आप क्रॉस. This is your space. Whatever you want to write, इधर स्केयर लिख के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, fine. It depends upon your requirement. ये आपकी स्पेस है, कुछ भी करें यहाँ. Ideally जो नाम है should be done. X की वैल्यू 10 किसने रिसीव की? X की वैल्यू 10 received by y 10. Y equals to y cross y. क्या आंसर आ गया? किसमें स्टोर हो गया? अपडेटेड वैल्यू क्या है? रिटर्न y. y रिटर्न होगा थ्रू दिस. इसको क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप. You call this रिटर्न टाइप. जो फंक्शन जिस वैल्यू को रिटर्न करता है उसकी डाटा टाइप क्या है? तो वही हम यहाँ लिखे इंटीजर. 100 की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर. The same is written over. So 100 would be returned over here. इधर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सी आउट. 100 will be displayed. So you have created a generic function in which ये जस्ट मैं आपको भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. ये भी हमने n number of times रिपीट करनी है एग्जाम्पल कि ओवरऑल हाउ इज इट इज हैपनिंग. इट इज जस्ट लाइक a library function. You have called a function with the required input. It will compute that input and report back the result back to the main. So int y भी बाहर
मेन के बाद इंट स्क्वायर, आपने क्या पूछा? ये सर ये जो बाहर int square int y है। जी ये मेन के बाद आता है, मेन के बाद जी, मेन के बाद। तो थोड़ा इसका टेक्स्ट देख लेते हैं, हम टेक्स्ट के साथ साथ को रिलेट करते जाएंगे चीजें। मॉड्यूलराइज, मॉड्यूल बनाया, इट इज वन ऑफ द फंक्शन, इट कुड बी एन नंबर ऑफ फंक्शन। सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी, यहां पर हमने समझने के लिए एक लाइन को कोड लिखा है। इट कुड बी अ मनी विड्रॉल कोड फ्रॉम अ एटीएम मशीन, जो बार बार यहां कॉल हो रहा है। यू डोंट हैव टू रीराइट द कोड अगेन। Function can be called n number of times. This one. एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, those are called local variables of that function. X is a local variable of, Y is a local variable of square function. Local, known only inside the function in which they are defined. X is defined over here. Y is defined over here. Your task was to get the square of this value and you have done that. C out X करें यहां, क्या आएगा? 100 हो गया X? X तो 10 ही है, ये पॉइंट आप समझ लें। X 10 ही है, बट उसका आंसर आपका रिक्वायरमेंट ये थी कि जो 10 है इसका स्क्वायर बता दें। And you have done that by passing the value to the, वहां तो receiving end को और वेरिएबल, उसने प्रोसेस किया, 100 हुआ, रिटर्न किया। ओवर हियर इफ यू वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ x टू बी अपडेटेड, तो यहां पर आप लिखते हैं इन आंसर ans equals to square c out, ओके आंसर को छोड़ा x ही कर देना, c out x स्क्वायर को इक्वेट कर देना x पे, 100 अब अपडेट हो जाएगा। नाउ इट्स c out x, ये समझ आ रहा है जो लिखा है आपको? नाउ x इज अपडेट। पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्यों जी, व्हाट आर पैरामीटर्स? अभी तो पढ़ा इनपुट, ये x पैरामीटर, इनपुट, लोकल वेरिएबल्स पास टू फंक्शन। x is a local variable for main, it is passed to this one. फंक्शन प्रोटोटाइप मींस फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप राइटिंग कहते हैं फॉर्मली। आप देख लें, आपने यही लिखा है इंट स्क्वायर इंट, टेल कंपाइलर आर्गुमेंट टाइप एंड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉल किस तरह होता है? बाय राइटिंग नेम ऑफ द फंक्शन एंड गिविंग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। इंट स्क्वायर आफ्टर मेन, इंट स्क्वायर इंट वाई ने इसकी वैल्यू रिसीव की, रिटर्न वाई का डायरेक्ट भी कर सकते वैल्यू रिटर्न, वाई को अपडेट किए बगैर। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे फॉर यू टू डाइजेस्ट, इजंट इट? जी, दैट कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय प्रैक्टिस।